Hello, in this video we are going to discuss a very good question based on chess. The question is, in a game of chess, the knight moves in very specific manner. A knight's move consists of going two squares in one direction and then one square in perpendicular direction. For example, as shown in the figure below, the knight in the position depicted can move to any of the squares marked with an egg. Now suppose the knight is at this position, this particular position. So how it can make it moves is, so see, first of all it can take two moves in any direction. So let's assume कि वो यहाँ से first move and second move, then he need to take a move in direction perpendicular to this. So perpendicular to this means either this block or this block. So basically 1 2 and ये वाला move हो सकता है, या फिर 1 2 and ये वाला move हो सकता है, right? And this can be in any direction as in वो यहाँ पर भी दो moves ले सकते हैं, then perpendicular इधर या इधर जा सकते हैं, यहाँ पर भी दो move ले सकते हैं, then perpendicular इस block पर या इस block पे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर दो moves then perpendicular to this block or this block, यहाँ पे हमने we have already discussed to either this block or this block. So this is the way a knight moves in game of chess, right? Now our question is, if a knight starts at the top left corner of the board, so knight is starting from this position, can it reach the square of the bottom right corner? So this position, can it reach this position using only legal moves, visiting every single square on the board exactly once, visiting each and every square? तो उनको ये भी ब्लॉक कवर करना होगा, ये सारे ब्लॉक कवर करने होंगे, and that to exactly once, केवल एक ही बार कवर करना होगा. आप किसी पोजीशन पर एक बार जा चुके हैं, सपोज दिस इज पोजीशन नंबर 2 एंड यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस पोजीशन, तो आप वापस नहीं आ सकते इस पोजीशन पे. दिस इज द रूल. फाइन. सो दिस इज द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. यहां से यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. कैन यू रीच टू दिस पोजीशन विजिटिंग every square exactly once? Apart from that you can take only legal move. That is understood, right? So आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन पहले, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन पे जाइएगा. Okay, so let us discuss the solution of this video, this particular question. So see, suppose the knight is at this position. तो let me count the number of moves. वो किस तरह से पहुंच सकता है. तो 1 2 and this. After first move it takes, वो यहाँ पर आ सकते हैं. मैं randomly moves लेके कुछ शो करना चाहता हूँ आपको. Then again मैं 1 2 and 3. तो सेकेंड मूव पर वो यहाँ पर आ चुके हैं. फाइन. देन 1 2 and 3 रैंडम मूव सही है. थर्ड मूव पर वो यहाँ पर आ सकते हैं. देन 1 2 and 3 फोर्थ मूव पर वो यहाँ पर होंगे. देन 1 2 and 3 फिफ्थ पे यहाँ पर. देन 1 2 and 3 सिक्स्थ मूव पर यहाँ पर. फाइन. ये मैंने रैंडम मूव्स लिखे हैं, बट इन रैंडम मूव में मूव्स जो लिए, रैंडम मूव्स लिए अपन ने, उसमें यू शुड नोटिस वन थिंग, दैट ऑन एवरी ऑड नंबर ऑफ मूव, वो ब्लैक से ही स्टार्टेड फ्रॉम ब्लैक, तो हर ऑड नंबर ऑफ मूव पे ही इज एट वाइट, एंड ऑन एवरी इवन नंबर ऑफ मूव द नाइट इज ऑन ब्लैक पोजीशन. फाइन. आप चेक कर सकते हैं. अब आई वाज ऑन दिस पोजीशन नंबर 6. यहाँ से हम मूव लेते हैं तो 1 2 एंड यहाँ पर आप देखेंगे 7th में वापस वो व्हाइट पर आए हैं, राइट? यहाँ से यदि हम मूव लेते हैं 1 मूव, तो 1 2 and 3 will reach 8. So on every odd number of turn, we are reaching white block. On every even number of turn, we are reaching a black block, right? Now our question was, यहाँ से हमने start किया था. We have started from here. This is our first position, initial position. Fine. Now we need to reach this black, rightmost, bottommost black block, right? Now see, there are a total of 64 blocks in the square board. There's a total of 64 squares, right? These smallest squares I'm talking about. अब उसमें से first number वाले square पे he is initially placed at this position. Now the remaining square is 63. अब 63 squares, the knight need to cover all the 63 squares. Now this 63 is odd, and we have already seen that when he takes an odd number of turn, he reaches white. Fine. And on every even number of turn, he reaches on black square. So we need to reach this particular position on 63rd move.
No, that is not possible. Why? Because this is odd number of move, and on every odd number of move, we will reach on white block only. So this is the concept of this particular question. हम कभी भी सारे blocks को exactly once cover करके इस position पे नहीं पहुंच पाएंगे. Fine, and the logic is simple. On every odd number of move, white block पर हम पहुंचते हैं. On every even number of move, black position पर हम पहुंचते हैं. तो suppose first पे मैंने आपको पूरा करके दिखाया. First पे we were reaching here. Second पे suppose मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. Third पे again here. Fourth पे आप देखेंगे यहाँ पर आ जाता हूँ. Fifth पे यहाँ पे. Sixth पे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा. तो आप देखेंगे even number पे हमेशा हम black पर आ रहे हैं और odd number पे हमेशा white पर आ रहे हैं. Now is total 64 blocks है. उसमें से एक block पर वो पहले से ही है. तो now we need to cover remaining 63 and we want कि वो 63 number वाले move में it should reach this position. Now that is not possible because 63 is odd and odd number of पे वो white पर ही पहुंच पाएंगे. So this was the solution of this particular question. The solution is quite easy. थोड़ा सा property use हुआ है इसमें, right? So I hope ये clear होगा आपको. Thank you.